Hello friends, welcome to SSP Math. Today we are going to take some problems on Lagrange's equation again. So problem is solve x into y minus z into p plus y into z minus x into q is equal to z into x minus y. So this differential equation is of the form pp plus qq is equal to r given a, means directly pp plus qq is equal to r form given a. So we have to, what is our first step here? Our first step is we have to write auxiliary equation here. Dx by p is equal to dy by q is equal to dz upon r. Now what is the value of p q r here? This p is equal to x into y minus z, q is equal to y into z minus x, and r is equal to z into x minus y. Put here, so that is, this becomes dx upon p is x into y minus z is equal to dy upon q is y into z minus x, and equal to dz upon r, so that is dz upon z, r is z into x minus y. So this is the symmetrical simultaneous differential equation. We have to find solution of this symmetrical simultaneous differential equation. We know the two methods how to find solution of this. First method is grouping method and second one is multiplier method. So here is grouping method applicable. If we choose group dx is equal to dy, then z is present, or we cannot cancel this z here, means we cannot take dx equal to dy, or even if we take dy equal to dz also, then x present or dx equal to dz, then y present means grouping method is not applicable here. Using grouping method we cannot find here a single solution of this differential equation. So how we solve such type of problems? Then we have to use method of multipliers. So you have to choose multipliers. Suppose dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r है, तो हमें ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने हैं एल एम एन सच दैट एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू 0. तो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो वो मल्टीप्लायर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लायर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर मल्टीप्लायर्स क्या आएंगे? इफ़ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली हियर, देखो एक्स वाई, और इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस एक्स वाई इनसाइड ब्रैकेट मीन्स इसका यदि हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो वो क्या आएगा? एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड. मीन्स सिंपली मैंने क्या किया है, एक्स वाई जेड ने अंदर मल्टीप्लाई किया. नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन केयरफुली हियर. This xy get cancel, this minus xz, this plus xz get cancel, and yz get cancel. Means simply क्या किया यहाँ पर xyz ने अंदर मल्टीप्लाई करके एडिशनली, मीन्स मल्टीप्लाइज क्या है, इसको किसने मल्टीप्लाई किया? 1 1 1 ने. सो फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स आर हियर 1 1 1. सो चूज set of multipliers here 1 1 1, and therefore each ratio is equal to 1 into dx. Which ratio means this differential equation totally is equal to 1 into dx plus 1 into dy plus 1 into dz upon 1 into this. x ने अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम xy माइनस xz plus 1 into this, that is yz minus yx, and plus z into this, that is zx minus zy. Okay, so if we take addition here, this yz get cancel, zx get cancel, xy get cancel, means we can write here dx plus dy plus dz upon 0. And what is dx plus dy plus dz upon 0? What is the meaning of this? Means from this we can write dx plus dy plus dz equal to 0. And if we get dx plus dy plus dz equal to 0, this is one differential equation. How we find solution of this? By taking integration. So if we take integration of this, we know the integration of dx is x plus integration of dy is y plus integration of dz is z is equal to c1. So this is the first solution. देखो हमें यहाँ पर फर्स्ट सोल्यूशन मिला 1 1 1 मल्टीप्लाइज लेके. अब आप सेकंड मल्टीप्लाइज 2 2 2 ले सकते हैं, 3 3 3 ले सकते हैं. सो डोंट टेक दैट बिकॉज दीज आर दी कांस्टेंट, वी गेट सेम सोल्यूशन. यदि 2 2 2 मल्टीप्लायर ले तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कांस्टेंट में शिफ्ट हो जाएगा एंड सेम आंसर मिलेगा. 3 3 3 मल्टीप्लाइज लिया तो उससे भी ये 0 होता है, लेकिन कॉमन लेके c1/3 हो जाएगा, c1 डैश लिखेंगे हम. सो वी गेट सेम सोल्यूशन. देखो यदि एक सॉल्यूशन कांस्टेंट से आया तो दूसरा सॉल्यूशन जो है वो
वेरिएबल्स चूज करो। यदि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम टाइम जो ब्रैकेट में टर्म होती है वो पहले ऑब्जर्व करो। मीन्स सपोज इफ यू कंसिडर हियर दिस एक्स वाई जेड इज नॉट देयर, इफ यू कंसिडर सपोज हियर एक्स वाई जेड इज नॉट देयर, मीन्स ए एक्स वाई जेड को मैं निकालता हूँ। मीन्स यदि इस टाइप का प्रॉब्लम है, आउटसाइड ब्रैकेट कुछ टर्म प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लायर चूज करते वक्त ऐसा कंसिडर करने का जो आउटसाइड ब्रैकेट टर्म है वो सपोज वहाँ पर नहीं है। ओके, सो y माइनस जेड है, बाकी की जो टर्म है उसकी एडिशन लेके देखो यहाँ पर क्या आएगा, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स एंड प्लस x माइनस वाई। देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है, z कैंसिल हो रहा है। ओके, सो सेकंड मल्टीप्लायर्स हमें क्या चाहिए, ऐसे मल्टीप्लायर चूज करो जिसको चूज करते समय एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। मीन्स वी वांट टू डिवाइड हेयर बाय एक्स, हेयर बाय वाई एंड हेयर बाय जेड। सो सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स आर कौन से, 1 by x, 1 by y and 1 by z. Okay, so therefore we can write here again each ratio is equal to 1 by x, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, l dx plus m dy plus n dz, that is 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz अपॉन dx dy dz को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 by x into x, x get cancel, or write here one more step, 1 by x into this y minus z plus 1 by y into z minus x and plus 1 by z into x minus y. So this z get cancel, y get cancel, x get cancel. So you can write here one more step, that is dx upon x plus dy upon y plus dz upon z divided by y minus z plus z minus x plus x minus y. So in denominator all terms get cancelled. So you will get here dx upon x plus dy upon y plus dz upon z upon 0. So what is the meaning of this? This means dx upon x plus dy upon y plus dz upon z equal to 0. And if we take integration here, then we will get integration of dx upon x is log x plus integration of dy upon y is log y and plus integration of dz upon z is log z is equal to constant of integration, say log c2. And we know that log a plus log b plus log c is log of a b c, that is log of x y z is equal to log c2. So log get cancelled, x y z is equal to c2. This is the second solution. And therefore how we write final solution of given Lagrange's equation, that is f of c1 c2 is equal to 0, means that is solution is c1 is x plus y plus z and c2 is x y z is equal to 0, means f of x plus y plus z comma x y z equal to 0 is the solution of given partial differential equation. Next example is solve x into y square minus z square into p plus y into z square minus x square into q minus z into x square minus y square is equal to 0. So first we will write this differential equation in the form of pp plus qq is equal to r, means that is x into y square minus z square into p plus y into z square minus x square into q is equal to z into x square minus y square, that is pp plus qq is equal to r form है. And if pp plus qq is equal to r form, then how we find given the solution of given differential equation? So first you have to write auxiliary equation, that is dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. And how we write auxiliary equation here? This is equal to dx upon p, p equal to x into y square minus z square is equal to dy upon q, q is y into z square minus x square and is equal to dz upon r, r is z into
x square minus y square. Now observe this equation carefully here, and if you observe this equation carefully, so we cannot apply here grouping method. So for solving again, or for solution of this differential equation, we have to use set of multipliers. Okay, so यहाँ पर देखो कांस्टेंट मल्टीप्लायर आता है का 1 1 1, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में आया था एक्स वाई स्क्वायर, इधर एक्स ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर टर्म आती है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई तो कैंसिल नहीं होती, मीन्स 1 1 1 मल्टीप्लाइज नहीं आएंगे. सपोज नाउ कंसिडर सेम एज लास्ट प्रॉब्लम. सपोज आउटसाइड ब्रैकेट की जो टर्म है वो एब्सेंट है, मीन्स सपोज दिस एक्स वाई जेड इज नॉट देयर. सो इफ यू टेक एडिशन ऑफ रिमेनिंग टर्म, देखो यार माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, minus x square plus x square get cancel, and this y square get cancel. Means first set of multipliers is here. Choose set of multipliers 1 by x, 1 by y and 1 by z. Okay, and therefore each ratio equal to 1 by x into dx plus 1 by y into dy plus 1 by z into dz divided by 1 by x into x डायरेक्ट कैंसिल करता हो, क्या रहेगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस here 1 by y into y get कैंसल, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 by z into z get कैंसल, remaining term is x square minus y square. So this y square get cancel, this z square get cancel, minus x square plus x square get cancel. So we will get here dx upon x plus dy upon y plus dz upon z divided by 0. Means that is dx upon x plus dy upon y, that is dx upon x plus dy upon y plus dz upon z equal to 0. Now how we find solution of this differential equation? By taking integration, because variables are separate here. So integration of dx upon x is log x plus integration of dy upon y is log y, and plus integration of dz upon z is log z is equal to log c1 say. And we know that again log a plus log b plus log c is log of a b c, that is log of x y z is equal to log c1. So log get cancel. Using this we can write x y z equal to c1. So this is the first solution. Now for second solution again we have to choose second set of multipliers. हमने पहले ही चेक किया इस प्रॉब्लम को कांस्टेंट मल्टीप्लायर नहीं है, तो अनदर मल्टीप्लायर क्या आ सकते हैं, वेरिएबल्स ही आ सकते हैं. यदि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो अंदर ब्रैकेट में जो टर्म है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑब्जर्व दिस टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2 हियर. इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2, देन आउटसाइड ब्रैकेट की जो टर्म है उसकी भी डिग्री 2 करने का प्रयास करो. मीन्स व्हेन वी गेट दैट डिग्री 2, इफ यू मल्टीप्लाई हियर x, हियर y एंड हियर z. यदि एक्स वाई जेड से ट्राई किया तो क्या होता है, देखो यहाँ पर x ने मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर y ने मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर देखो z ने मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल. मीन्स सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स आर, choose second set of multipliers, that multipliers are x y z. Okay, and therefore each ratio equal to, एक पे टेक multiplier here x y z, then we have to multiply numerator, means x dx plus y dy plus z dz, x dx plus y dy प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x ने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. सेम सेकंड को y ने मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज x dx plus y dy plus z dz divided by, after simplification this is x square y square minus x square z square plus y square z square minus y square x square plus z square x square minus z square y square. Okay, so this minus z square y square get cancel, this x square z square get cancel, x square y square get cancel, so we get in denominator 0.
So using this we can write, therefore x dx means all terms get cancelled, so x dx plus y dy plus z dz equal to 0. So this is one differential equation. How we find solution of this? By taking integration. So integrate with respect to only take integration of this because variables are separated here. So integration of x dx is x square by 2 plus integration of y dy is y square by 2 plus integration of z dz is z square by 2 is equal to c2 by 2. So if you multiply throughout by 2, 2 get cancelled, and therefore solution of this is, that is x square plus y square plus z square is equal to c2. This is the second solution, this is the first solution, and therefore how we write the solution of given partial differential equation, that is f of c1 c2 equal to 0. This implies f of c1 is xyz comma c2 is x square plus y square plus z square equal to 0. This is the solution of given partial differential equation of order 1 or given Lagrange's linear equation. Okay, thank you.